Good morning, welcome to BIOSS. I am Supransakaran Singh and you are watching online Botany. Last class we are talking about biodiversity and our class bujile biodiversity is the entire variety and variability of species that are available on the globe over a period of 3.5 billion. It's a history of 3.5 billion since life originated on Earth. So over this period of time, life has gone across so many changes. निजको इवोल्यूशन रा प्रोसेस रे परिवर्तित करी करी जो हजार लक्ष लक्ष फॉर्मेट रे पहुंचिला 1.8 million species 1.8 million species across the globe. तुंद्रा रो आरंभ करी की साइबेरियन तुंद्रा रो आरंभ करी की माउंट एवरेस्ट रो पीक रे भी सी डीप सी रे भी मेरियाना ट्रेंच रे भी और जोठी सी एंड लैंड मिसी वाले से जगह रे भी लाइफ इज एवरीवेयर लाइफ इज प्रेजेंट लाइफ इज हैविंग इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर सब जगह निजर उपस्थिति जाहिर करि परला से जो वैरायटी नेला जो परिवर्तन नेला जो निजको अनेक रूप रे परिभाषित कला प्रकाशित कला that is known as biodiversity that is known as the basic fact of biodiversity by जैव विविधता से जो जैव विविधता that shows the capacity of life to sustain on earth in any adverse situation. That's why we said biodiversity is the natural wealth of earth. If something is very valuable, if something is very costly, and if something is very, very rare, then we should take care of it. Last class में से यही पढ़ुतिले what is biodiversity and why it is important. So if it is important, what we need to do? We need to protect it. We need to protect it. Reason is, if not we, then nobody else can. जदि आमे करिबानी ताहले आजी पर्यंत एमिति केही नहांती जे एटा को करि परिबो. I have said it again and again that earth is the only place where life originate हला and flourish कला उद्भव हला एवं विकास हला. सो जेतेबेले उद्भव और विकास केवल पृथ्वी रे ही हेची एवं आजी पर्यंत आमे अदर कोनसे ट्रेसेस पाउ नाउ in the entire solar system or beyond solar system. So life on earth is very, very precious and we should protect it. And I am very, very scared to tell you that ajitu purboru jebetu life originate hechi setu aji bhitare 5 mass extinction has been occurred. पंचथर जीवन सत्ता almost लगभग finish हो जाइए खत्म हो जाइए. The earth is devoid of life, but life originates again. If the trend continues, then there is a threat that this may happen again. Knowledge, power, structure. जो प्राणी जेते सबल, जो प्राणी जेते बड़, जहाँ पाखे जेते शक्ति अच्छी आमे ताको सेतिकी स्टेबल बोली कहि थाउ. But this is not the fact. This earth was ruled over by gigantic mammoths, gigantic dinosaurs at certain point of time in the Jurassic period. But all of them get extinct. Vanish हो गले, नष्ट हो गले, से प्रजाति संपूर्ण भाବରେ विलुप्त हो गले. There are so many species today also who are on the verge of extinction. जो माने विलुप्तर द्वार देश रे पहुंची सारलेनी नष्ट होई आसिलेनी जो माने दिने रोम करूथिले ऑल ओवर द अर्थ जेमिति कि चिताबाक एंड इट इज वेरी सैड टू से दैट ए जो एक्सटिंक्शन वर्तमान जो एक्सटिंक्शन हबा पे जाउची बा जति हबो ता पे सबटु अधिक रिस्पांसिबल रहिबा आमे वी द ह्यूमन बीइंग. Why? Because we have ventured into the natural habitat of the animals and plants. They are not coming to us. We are venturing into their community, into their area, into their periphery.
दैट्स व्हाई बहुत समय जो मनीष एवं जंतु मान भितर क्लास होउची रीजन इज अस ओनली वी ओनली ताठु बड़ विपदजनक जिनिस आम बर्तमान कर चलছে कोन जनसंख्यार विस्फोरण the way the population of us is increasing जति की जोर रे आमे हमर जनसंख्या बढ़ुची सेति की जोर रे आमे पृथ्वीटा को कबलित करी करी चलीचे so in this way what we are doing we are actually converting the natural thing of the earth into artificial comfort zones industrialization बढ़ी गला deforestation बढ़ी गला farmland रो आवश्यकता अधिका पड़ला so we are venturing and converting the natural earth into an artificial habitat एवं तार परिणाम आमको ही भोगिया को पड़ुची in the form of pollution now pollution is everywhere air रे air pollution water रे water pollution soil pollution बहुत noise create होची noise pollution and यार सीधा सड़क impact पड़ुची हमर आर्थ क्लाइमेट ऊपर एवं आर्थ लाइफ ऊपर हाउ आमे जते बेले पोल्यूशन बढ़ी बढ़ी चलुचे एयर पोल्यूशन हला वाटर पोल्यूशन हला सो एयर और वाटर ऊपर डिपेंड करूथुबा बा बहुत किछि जीव जंतु एवं गछलता जो मानकर दो आर वेरी डेलिकेट से माने धीरे धीरे नष्ट हो गले धीरे धीरे नष्ट हो गले नॉइज जंगल भीतर देख जो रास्ता जे ता भीतर गाड़ी जीवा आरंभ कला ट्रेन जीवा आरंभ कला नॉइज पोल्यूशन हला एनिमल्स मानकर नेचुरल हैबिटेट नेचुरल हैबिट्स चेंज हला से मानकर मेटिंग बिहेवियर चेंज हला सहवासर इच्छा मरी गला एवं एमती बहुत समय हला जेते बेले कि बहुत गुडे पशु पॉपुलेशन ही कले नाही एवं तांकर वंशवृद्धि हो नै दे आर ऑन द वर्स्ट ऑफ एक्सटिंक्शन सो व्हाट वी नीड टू डू आमे बुझुचे जे एटा हम पे बहुत मूल्यवान एवं यार आमे सुरक्षा करबा उचित सो इन सच सिचुएशन as the most evolved animal of this plant it is our responsibility to protect preserve the climate the biodiversity the natural wealth of earth so how can we protect it how can we preserve it that is known as conservation of biodiversity so under conservation what can we do we can protect them there are three things you can do protection restoration and gene bank so what is protection you might have heard about reserve forests abhayaranya national parks biosphere reserves what are they आमे एया करि परिबा जे जो जगार से माने रहुछंती जो जगार से बायोडायवर्सिटी ग्रो करिछि आमे ताकू प्रोटेक्टेड एरिया करि दबा लीगली एंड अवेयरनेस जागृत करिकी सो दैट एरिया should be only for them and human intervention should be minimum in any form it should be restricted completely that is how protection can be done and the second point I said restoration what is restoration means what has been on the verge of finish has the verge of extinction we have to recover it धरिनिया जा गोटे जंगल से barren हे जाउची आमे ताको प्लांटेशन करबा आरंभ कले पुणे आउथरे से ग्रीनरी फेरे आनिबा आरंभ कले देखिबे बहुत जगह एमती हुए जंगल भितरे हरिण थांती ठेकुआ थांती छोट छोट जीव थांती एवं जंगल कटि कटि गला पर ना से माने ऑटोमेटिकली सेठु आउट हे जाई थांती लोक खाई जाई थांती शिकारी जंतु खाई जाई थांती एवं से एरिया बैरन हे जाई थाए इवन फ्रॉग्स एंड स्नेक्स भी से एरिया छाड़ी दे थांती बट वंस सेठी जतले ग्रीनरी फेरिबा आरंभ करे घास उठिबा आरंभ करे गछ उठिबा आरंभ करे सेतबे से जगह को ऑटोमेटिकली जंतु माने जीव माने फेरिबा स्टार्ट करंती दिस इज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फूड चेन खाद्य श्रृंखला एवं शक्ति श्रृंखला फूड चेन एंड एनर्जी चेन रो जो साइकिल चले
ताकू ही नहीं कि इकोसिस्टम डेवलप हुए एंड दैट इकोसिस्टम वी कैन रिस्टोर इट इन द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरेशन. एंड द थर्ड थिंग आई टोल्ड इज जीन बैंक. व्हाट इज अ जीन बैंक एक्चुअली? जीन माने कोन गुणसूत्र, अर्थात आम भीतर जहाँ क्यारेक्टर, प्रति जीवर जहाँ क्यारेक्टर, प्रति गछर जहाँ क्यारेक्टर, प्रति अणुजीवर जहाँ क्यारेक्टर, बैक्टेरिया हो, भाइरस हो, जेकोसी लाइफ फोर्स रहो जहाँ क्यारेक्टर, दैट इज बीन कॉइन्ड इन द जीन. दैट जीन इज द कैरियर for generation to generation to generation. So in such cases where the protection and restoration is not possible, or even if it is possible and still for further research and development, we need to store the genetic informations of all the life force that is available on the earth. बहुत ही सिस्टमेटिक वे रे, बहुत सेफ जगह भितर डीप फ्रीज रे -4 डिग्री टेम्परेचर रे कंप्लीटली क्लीन, कंप्लीटली सैनिटाइज्ड फॉर्मेट रे ताकू स्टोर करा जाए गोटे जगह रे, ताकू हमें जीन बैंक बोली कहू. जदि तुम माने केतेबेले सुजोग पाइबो, यू कैन विजिट सिफा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर एट भुवनेश्वर और NRRI कटक, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, to see this gene bank, how it look like. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. So ये जो कंजर्वेशन कथा हमें कहूचे, ये जो प्रोटेक्शन रिस्टोरेशन बा जीन बैंक कथा कहूचे, एटी जीन बैंक को जदि छाड़ी देबी, वो प्रोटेक्शन और रिस्टोरेशन कथा कहिबी, ताले याको हमें बेसिकली कंजर्वेशन भितर ए दुटा जिंस को हम बेसिकली नहीं कहउचे, याको हमें दी प्रकार करि परिबा. It can be at the place where it originally exist, अर्थात जो जगार से बायोडाइवर्सिटी बा से स्पीसीज ग्रो करिथिला, फ्लोरिश हेइथिला, that same place should be allocated to them specifically, particularly without any intervention of human being, एवं सेठी तांकु सेतिकी सुविधा एवं सुजोग जोगे दिया जाए, so that those species, those varieties can grow there, can copulate and can flourish. से प्रकार प्रणाली को हमें कहूचे in situ conservation. In situ conservation, the conservation at the place of occurrence. जो जगह रे से बायोडाइवर्सिटी से स्पीसीज से वेराइटीज एग्जिस्ट करूचंती, से प्लेस नहीं सेमानकु कंजर्व करिया, से प्लेस टाकु सुरक्षित करि दबा एवं सेमानकु बढ़िबा पई सुजोग दबाकू जो प्रोसेस रे हमें कहू ताकू हमें कहू इन सिटु कंजर्वेशन. नाउ व्हाट इज एक्स सिटु कंजर्वेशन? एटा मु दुटा लेखछि ना, इन सिटु एंड एक्स सिटु. व्हाट इज एक्स सिटु? नाउ इन सर्टेन केसेस हमें देखिले जे जो जगह रे से बायोडाइवर्सिटी ग्रो करिथिला, जो जगह से स्पीसीज ग्रो करिथिला, सेही जगह रे ताकू वर्तमान आमे आउ रखी परिबा नाही, बा तार रिस्टोरेशन एते सहज नुहे, बा that particular species is at danger, then आमे ताकू सेठू नहीं आसु गोटे लैब भितरु को बा गोटे फार्म हाउस को बा गोटे जूलॉजिकल पार्क को जोठी आमे तांकू आर्टिफिशियली हो बा नेचुरली हो सेही भली गोटे एनवायरनमेंट दो. द क्लाइमेट, द प्लांट्स, the earth, the soil, the water available, आमे ताको एही भली भाବରେ व्यवहार करू, so that that particular species can groom in house. जेतले आमो कंट्रोल भितरे ताको आमे कंजर्व करिया पे चेष्टा करू, आमे ताको कहू एक्स सिटु कंजर्वेशन. एक्स सिटु कंजर्वेशन. सो एही फॉर्मेट रे जेतले आमे जीवा आरंभ कले, we have created biosphere reserves. What is biosphere reserves? The large areas where varieties of species, varieties of genus occurred exist, and very specifically also. National parks, little bit small in area, but again dedicated to a particular species or species. And we have zoological park and botanical park. We have zoological park and botanical park. हमें जहाँ को चिड़ियाखाना,
And the beautiful example is the pride of Odisha and the pride of India also, I can say, Nandankanan, the only area, the only place where white tiger breeds in captivity. It's the only place. Nowhere, in no other zoological park this has ever happened. So the conservation of biodiversity, be it in situ, ex situ, or preparation of gene bank, is very, very vital and very, very important. Now, apart from this, when we are talking this as an important issue, we the Indians have never stand alone. We are in the flow. Rather, India is the country which has proven its mantle in conservation of biodiversity. So in India, we have an coexistence with our natural resources, with our biodiversity. प्रकृति को आमे जतिक निजर करिक रखिचे बोधे वर्ल्ड अन्य कोनसी कल्चर रे एते क्लोज देखा जाय नै फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन जते बेले कॉइन ऊपरे एनिमल रो प्रिंट थिला बा प्लांट रो प्रिंट थिला एवं जने जटाजुट रखिथिबा मनुष्यर प्रिंट थिला जहा को आमे हमर गॉड पशुपति बोली कहू आवर गॉड लॉर्ड शिव इज कॉल्ड एज पशुपति दैट इज the value that we have enthused upon nature प्रकृति को आमे सेति मूल्य देइछे हमर पर्व पर्वाणी सहित सब केस रे प्रकृति रो गोटे बहुत क्लोज संपर्क रही आछि आवर कल्टिवेशंस आवर सोइंग ऑफ सीड्स एवरीथिंग इज सो नीटली टैंगल्ड विथ नेचर जेमिति की बिहू जेमिति की ओणम जेमिति की ओडिसा रा नुआखाई नाउ why this happened? Because India is a land. जदि हमें इंडिया को देखिबा India is a land which is situated at the longitude of 20.59 degree north and latitude of 78 degree 8.96 degree east. If we will take a globe like this, we are mostly here. North-east section, and very close to the almost close to the line of jota ka me koche Vishwa Rekha. We are very nearer to that, but we are entirely at the northeast hemisphere. Now, if you will see it in detail, what we found in India actually, संपूर्ण नॉर्थ रे कौन रहिला ना Himalayan mountain range. Himalayan mountain. Below that, we get Gangetic plain, Gangeya Samatala Bhumi. Below that, जोटा को हमें मिड नागपुर प्लेटू बोली कहूचे and on the both side दी पट जाक कौन ना पूर्व घाट एवं पश्चिम घाट पर्वतमाला and the southern most part जोटा दक्षिण भाग संपूर्ण से गोटे उपद्वीप भाया समुद्र भितर पशिगला तीन पटे समुद्र नाउ द एंटायर स्ट्रक्चर इज so beautifully woven that we can have so many variety of life form in our land, in our geographical territory. एवं ए फॉर्म भितरे भारतर गोटे जगह रे वर्षा सबुठु कम हुए ताको हमें कौन कहूचे रन ऑफ कच्छ ताको हमें कहले रन ऑफ कच्छ सो जदि हमें इंडिया रो ज्योग्राफी को देखिबा we get everything, we get mountain
peaks covered with snow, ice. Then we get plain area, we get plateaus, Malavbhumi, we get Eastern Ghat, Western Ghat, smaller mountains, but they are older than Himalayan mountain range. And we have a desert also. There is one cold desert also. There is a cold desert also. So this variety, Bharatar jo biodiversity को समृद्ध करिছে. And two of them, the Himalayan mountain and Western Ghat, these are two major biospheres of India. And India as a whole is one of the 7 mega diversity of world. पृथ्वीर 7टा मेगा biodiversity भितरु India अन्यतम, one of the 7 mega biodiversity of the world. Why it is mega? Just have a look here. We have 2,546 species of fishes. ଏବେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ 2,546 ପ୍ରକାରର ମାଛ. Amphibians ଆମେ କେତେଟା କହିପାରିବା? ବେଙ୍ଗ, କଇଁଛ, at best 2. 197 amphibians found in India. 408 reptiles, सरीसृप. 1,250 types of birds and 410 types of mammals found in India. That is why the biodiversity in India is so rich. And these species have spread across India due to their capacity of adaptation and variation. ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା. ଆକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଦେଖି ଚାଲ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ଶୁଣ. ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ. ନା ଛୋଟ ନୁହେଁ, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼. ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଖୁଛେ. Beautiful. Its fragrance is good also. याकू कुहाଯାଏ ବ୍ରହ୍ମକମଳ. ଏ ଫୁଲକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମକମଳ. ए फूल स्पेसिफिकली हिमालयन रीजन रे कोल्ड क्लाइमेट रे फुटे. बट तुम मैंने भल भाव देखि पारथिबो वीडियो रे जे इट इज बीन पॉटेड. गोटे प्लांट, ए प्लांट को गोटे पॉट रे लगा हितिला एवं मु ताको रिकॉर्डिंग करथिली आमरी गार्डन रे. दैट मीन्स द प्लांट व्हिच इज ओरिजिनली एन इनहैबिटेंट ऑफ हिमालयस इज नाउ had its place in Odisha also. This is the capacity of variety and variability. This is the capacity of variation and adaptation. So, in India, we have taken so many steps to protect our biodiversity. To protect our biodiversity, we have zoological parks, we have botanical parks, we have national parks. National parks. Gir jungle mane achi pila mane shunicha kebe? Now Gir is a place which is the last abode for Asiatic lion. Asia singhara sesha jaga. This is the only place where this variety of lion is found. So UNESCO has formed so many Indian national parks, has identified them as Biosphere. पृथ्वीर जैव विविधतार विशाल ग्रंथागार. एबे आमे ता ऊपर गोटे छोट मु गोटे स्लाइड्स सो तुम मन को देखेबी. बहुत अल्प समय भीतर आमे ताको देखिबा एवं तमे माने ताको लेखि देले भी आहुरी बेटर हे परिबो. इट इज टू गुड फॉर यू ऑल. सो लेट्स हैव दस टू द 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स of India. Let's have a look. So, let's the journey begins. First, Nilagiri Biosphere Reserve. Now, Nilagiri Biosphere Reserve is situated in the states of Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. 1986 रे आको डिसाइड करागला बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया भाबरे. And Western Ghat पर्वतमाला जो कहूली तार एटा गोटे पार्ट. And basically this is
covering an area of 5,520 square kilometers. आउ मुख्य स्पीसीज है देखा जाए से माने नीलगिरी तहर, टाइगर, लायन टेल्ड macaw. Now, wow, this is Nanda Devi Biosphere Reserve, established in the year 1988. This is situated in Uttarakhand, part of Western Himalaya. The area is 5,860 square kilometers. Snow leopard and Himalayan black bear is the primary fauna. जहाँ मुख्य भाव में देखा जाए. Third one is बर्तन जोड़ा तुम देखो जो मैंने this is Gulf of Mannar, established in the year 1989. तमिलनाडु रे अवस्थित and दुगंग species एटी बहुत देखा जानती 10,500 square kilometer रे प्रसार लाभ करची. Now this is Nocrack, established in the year 1988. मेघालय रे अवस्थित Eastern Hills part, and this is famous for red panda. Okay, 820 square kilometer is the area. Wow, now this is Sundarban, the only place on earth where tiger resides in mangrove. Part of Ganga and Brahmaputra basin, West Bengal Rabastita, and spread over an area of 9,630 square kilometer, place of Royal Bengal tiger. The sixth one is Manas, situated in the state of Assam, established in the year 1989, spread over an area of 2,837 square kilometer, specifically Asiatic elephant, tiger, turtle, hipsid hare, golden langur, ये सब एठी देखा जानती. Now our own Similipal. Welcome to Odisha. Established in the year 1994, part of Mayurbhanj district in the state of Odisha, Deccan Peninsula, Eastern Ghatra, got a part, spread over an area of 4,374 square kilometer, gaur, Royal Bengal tiger, Asian elephants देखा जानती. Eighth is Dihang Dibang, Arunachal Pradesh रे देखा जाए, Eastern Himalaya रे गोटे part, 5,112 square kilometer spread हेची, Mixim Takin and Musk deer देखा जानती. Ninth is Panchmari Biosphere Reserve, established in the year 1999, Madhya Pradesh रा गोटे part, semi-arid climate, 4,981 square kilometer रे spread हेची. Giant squirrel और flying squirrel एठी देखा जानती. उड़ंता गुंडुची रखर. 10th is अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, जोटा तुम स्क्रीन रे वर्तमान अछि. मध्य प्रदेश रो ओरिजिनली मध्य प्रदेश रे छत्तीसगढ़ रो गोटे पार्ट. माइकला हिल्स रा एरिया रे एस्टाब्लिश्ड 3,835 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. 4 antelope, Indian wild dog, Sarus crane, white rump vulture, sacred grove bush frog एठी देखा जानती. 11th is great run of Kutch. रन ऑफ कच्छ कथा कहूली भारत मरुभूमि गुजरात रे देखा जाए. दिस इज अ डेजर्ट इंडियन वाइल्ड आस गधा मानकर सेंचुरी. 12,454 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड है. 12th इज कोल्ड डेजर्ट. कहती ना कोल्ड डेजर्ट कथा. लुक एट इट. इट इज द पीन वैली नेशनल पार्क एंड इट्स सराउंडिंग एरिया. So हिमाचल प्रदेश रे अवस्थित वेस्टर्न हिमालय रे गोटे पार्ट एटी स्नो लियोपार्ड देखा जानती. 7,770 स्क्वायर किलोमीटर स्प्रेड हेची. नाउ इज कांचनजंगा सेंचुरी, established in the year 2000, सिक्किम रे पार्ट ईस्ट हिमालय रे established स्नो लियोपार्ड और रेड पांडा रे घर, spread over an area of 2,620 square kilometer. 14th अगस्त्यमल्लाई बायोस्फीयर रिजर्व, part of Kerala and Tamil Nadu, spread over an area of 3,500 square kilometer. Nilagiri Tahar और Asian elephant रो घर. 15th is Great Nicobar, established
in the year 1989, part of Andaman Nicobar Island, a typical island, charipate samudra, machire sthalabhaga, saltwater crocodile ro ghar, spread over an area of 885 square kilometer. 16th is Dibru Saikhoa. Now Dibru Saikhoa is situated in the year of 1997, established in the state of Assam, a part of Brahmaputra River, Eastern Hills देखि bohi jaichi 765 square kilometer area देखि, white winged wood duck, water buffalo, black breasted parrotbill, tiger ଆଉ capped langur, टोपी पिंधा माकड़ ए एरिया देखा जाते. 17th is Seshachalam Hills. Now Seshachalam Hills is actually Andhra Pradesh re situated, Chittur district or Kadapa district ro kichi part ko cover kare. It is part of Eastern Ghat, spread across an area of 4,755 square kilometer, and the main species that is found here is slender loris. The last one, the 18th one, is Panna. Panna is situated in Madhya Pradesh, famous for tiger, cheetal, chinkara, sambar and sloth bear. Over an area of 2,980 square kilometer, and covers, and established in the year of 2011, covers Panna district and Chhatarpur district of Madhya Pradesh. So these are the 18 Biosphere Reserve of India. So केमती लागला? Quite informative. Stay with us. We'll keep updating things like this. जहाँ भी हम पकड़े information हम gather करी परिवा हमें देख चलिए. So now we can understand how biosphere is so, how this biodiversity is so important to us. But ମୁଁ जो pollution कथा आरंभ करथिली, हमें से जो pollution को करी करी चालुचे, what we are actually getting? We are getting this greenhouse effect. Result, global warming. Outcome, polar ice cap is melting very fast. Rising of sea level. Global warming, sea water level rise kariba, sound pollution, air pollution, water pollution is endangering other species as well as us. ମୁଁ କତ ଏଇଆ କହିବି ଯେ ବୋଧେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ in the globe. So we have to work more on this aspect. ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବ want to make a career in biodiversity, you can have a golden opportunity. In Odisha, there are 2 universities जोठी तमे biodiversity रे PG करि परिबो. North Odisha University रे wildlife and biodiversity रे PG and PhD अछि. Whereas there is a beautiful institute at Koraput Central University of Odisha, where biodiversity and conservation of natural resources is taught as a postgraduate subject. You can do PhD there also. So पिला माने आज तो समय हे गलानी, आज बहुत humid climate, मु पूरा झाड़ा रे ओदा भी हे गलिनी. So आज रे क्लास को एट रखिबा, देखा अब नेक्स्ट क्लास रे. जदि चैनल रे नुआ ताहाले don't forget to subscribe it and press the like button, share it with your friends. Thank you. Have a good day.